Hello and a very warm welcome to my mystic world of tarots. Happy New Year 2021 and January, the very first month of this new year. And we all look forward with a lot of hope, positivity and light, for all the good things, bright things to happen this year. And January, since it's being the beginning month, of course, well begun is always half done. As you can see, it's the display of the runes before you. These are the energized runes. I'll show you my runes. And ये हमने पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए प्रेयर्स के बाद रून्स पिक किए हैं एंड आपको हम बताएंगे कि जब हम ये कार्ड्स रीड कर रहे हैं इट इज़ 8:30 इन द मॉर्निंग ऑफ 2nd of January. आज का जो गाइडिंग लाइट है आज के पर्टिकुलर डे के लिए एंड ऑफ कोर्स जो मंथ के लिए भी है दैट इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी. येस, ऑफ कोर्स आई विल शो यू द कार्ड. I'm in my prayer room and this is a card of creativity which is actually telling us that we need to be artless, we need to be a lover of beauty, nature, art, no melodrama, no drama in life. There should be no politics at the back of the mind. Just flow with the time, be good and welcome the beginning of this new year with open arms, with all the goodness and purity of heart. So these are the runes and yes, they are energized and so I'll just begin with your tarot predictions. I also have my pack of tarots for you and I am shuffling them. हम आपके zodiac sign के हिसाब से एक कार्ड अपने intuitive light के basis पर pick करेंगे. So wish you all the very best. And let's begin. Let's begin with your rune reading today. So, dear Aries, let's check out which rune you've picked for yourself. And of course, your rune is Incus. This is your rune. And if you see, you must be feeling good as you see this rune because this particular rune, it shows very strong connection with fertility. As I said, ये month creativity का month है. I would love to tell you that it's linked with Freya, with god of fertility. It is actually describing the seed stage. यानी कि कुछ नए projects, कुछ new ideas जो आपको relationships, हर चीज़ में कुछ seeds है and वो with the passage of time germinate करेंगे, bloom करेंगे, right? It's also talking about agriculture, horticulture, जो लोग farming में है, जो लोग nature के touch में है. This is gonna be a great time for you all. ये आपको ये भी predict कर रहा है that live in harmony with nature. This particular rune is telling you that. कुछ नए projects शुरू हो सकते हैं, हो रहे हैं. And successful relationship this rune is showing. Now this rune also talks about good health, right? But एक चीज़ ये रून जो आपको बता रहा है कि you need to be appreciative of the richness of life that you have been blessed with. And so have a wonderful, wonderful time ahead. अगर आप देखिए तो ये non-inversible rune है, like it is, it's the same up and down, whether you look at this way or this way. So it's a very, very fortunate, lucky rune. Picking one card for you, dear Aries. Well, you've drawn 8 of Cups, which is actually telling you, to move ahead of the things, projects, relationships, whatever that had been suffocating you, and now you believe that they no longer serve the purpose. So it's a wonderful start every way. Moving on to the next zodiac sign, and that is dear Taurians. And the rune that you have picked up is Nauthiz. It's Nauthiz. And this is actually a little difficult rune, right? It's a difficult rune because it means need, zarurat, dear Taurians. और एक ज़रूरत है यहाँ पर आपकी, आप सोचें अपने अनुभवों के बारे में कि
कहाँ पर आप लास्ट ईयर रिसोर्सेस को, फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए, या जो आपकी इमोशनल नीड्स थे, जो इमोशंस आपको दूसरों को देने थे या आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेयर डिड यू लैक। ठीक है, कुछ आप लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस इस मंथ महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रायोरिटीज़ को अपने सॉर्ट आउट करना है और डिसाइड करना है कि आप सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। One more thing I would like to tell you, that changes are on the way, and you need not waste energy in feeling anxious. So anxiety is not good, don't take a stress. जैसे कि हमने previous rune के बारे में बोला था, हम इस rune को भी अगर देखते हैं तो ये भी एक non inversible rune है। So ये जो आपको ये जो month है जनवरी का, you are guided to take an action, right? You just need to take an action. You need to realize, you need to sort out the priorities, and of course one tarot card for you. Just imagine you've drawn the Fool card, which is actually telling you that you're ready to take a giant leap. But before that, you need to evaluate, you need to analyze something, but of course you need not waste time in stressing yourself. Thank you so much. Have a great month ahead. Moving on to the next sun sign, and that is dear Geminis. And you've drawn the birth rune, right? If I show you, this is the rune that you've picked up for yourself. It's the birth rune. This way you'll see it, and it is considered, in my rune reading, it is considered the most mysterious rune, okay? Because कुछ cosmic, कुछ fate work कर रही है, right? And tradition says that whenever we draw this rune, so it's actually an indication that leave it on destiny, leave it on time, right? आपके लिए गाइडेंस यही है, एक आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सुपरफिशियल और चीज़ों को इग्नोर करना है, पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं रखना है। यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू बी एनालिटिकल, you are guided to read good books, you are guided to meditate, you are guided, to think about new ideas, how we can better ourselves, right? So सबसे बड़ी चीज़ है जो ये रून आपको बताता है कि you need to pay attention to your dreams, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू या कुछ ऐसे इंसाइट्स होंगे आपको कि आपको एक वे दिखाया जा रहा है। तो सुपरफिशियल से, अगर आप सुपरफिशियलिटी से अपने आप को दूर रखेंगे तो आप रियलिटी को, आने वाली रियलिटी को और क्लियरली देख सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स देयर, एंड कुछ फियर्स हैं आपके अंदर जिन्हें आपको किक करना है, हटाना है और आगे बढ़ना है। One card for you, dear Geminis. Well, you've drawn the Ten of Pentacles, which is actually telling you that financially this is going to be a wonderful month, and you'll be happy. Might be some money agreement, or some money is coming your way. So have a great month ahead, dear Geminis. Moving on to the next sun sign, dear Cancerians, and your rune is, I'll just show you this rune. Have a look. Your is Theurisa's rune. The name of this rune is Theurisa's, and it is also a difficult rune. Reason being, it's connected with Thor, the god of thunder, right? तो ये कुछ rune है जो natural disasters की बात करता है. Let me be very open with you, like volcanoes, earthquakes. अब यहाँ पर बात जब हम इन चीज़ों की करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी, ठीक है, कुछ अग्रेशन की भी, कुछ इमोशनल या साइकोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन अर्थक्वेक काइंड ऑफ थिंग। सबसे बड़ा तो जो तूफान होता है वो हमारे अंदर होता है, राइट? सो यू जस्ट नीड टू बी लिटिल अलर्ट, right? And it's also telling you one thing, that some constructive, very strong constructive changes, they are on the way if you handle things in an objective way, with the holiness of the heart and with the purity of the mind. So one
card for you, dear Cancerians, the Nine of Wands. You're feeling a little undecided, but it's the tarot right and guidance for you that with a good approach, with holiness in your thought, understanding the truth in reality, be with the truth and all your problems will be solved. Rather, not problems, I would say, your challenges, you'll be, meeting them out with more confidence. Have a great month ahead. Moving on to the next sun sign. And that is dear Leos. And you have drawn the rune Othila. This is your rune. I'm so sorry. This is the rune Othila, right? And this particular rune, it's very favorable. It's actually associated with your inheritance, your cultural inheritance, genetic inheritance, historical inheritance. And it is also telling you कि आप ये वक्त है कि आप अपने से जो छोटे हैं उनके अंदर आप इंस्टिल करिए वो वैल्यूज़ जो आपके फैमिली के हैं. एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड भी ये दिखा रहा है बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट और अ ग्रैंड पेरेंट. एक बहुत ही इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखा रहा है. कुछ इनहेरिटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अपने आप को ठंड से बचाना है. टेक ल्यूक वार्म वाटर, या अगर आपको हल्की सी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो जस्ट सी द डॉक्टर. दो हेल्थ इज़ फाइन. एक आपको कनेक्शन भी लगेगा अपने एंसेस्टर से, तो हो सकता है आप अपने एंसेस्ट्रल प्लेस भी जाएं. और एक चीज़ है जो ये रूल हमें बताता है दैट हमें रिजिडिटी नहीं रखनी है. हो सकता है ये मंथ हमारे लिए कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हो. सो बी फ्लेक्सिबल and accept the change open-heartedly. Your one card for you is the Hierophant, and the card actually tells you that ऑफिस में वक्त अच्छा रहेगा. गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी में इफ़ यू आर वर्किंग तो प्रमोशन के चांसेस हैं. अगर प्रपोजल है, शादी की बात है, तो वो मटीरियलाइज होगा. ऑल इन ऑल अ वंडरफुल कार्ड. लीगल चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन. Well, dear Virgos, the rune that you have picked up for yourself is Legis. That's the rune, and it's actually related to the element of water. So emotions, they will be playing a very dominant role in the month of January. It's also telling you about your intuitive quality, to connect your unconscious with your consciousness, with your intuition. एक्सेलेंट रून है क्योंकि एक तरीके का साइकिक डेवलपमेंट, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ मेडिटेटिव हो रहा है जो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सोना के वे में आपको अंदर से वो निखारेगा. राइट. आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर बिलीव रखिएगा, विश्वास रखिएगा इस मंथ. एंड आपके सपनों के द्वारा भी कुछ चीज़ें आपको हो सकता है नेचर, यूनिवर्स कुछ कन्वे करने की कोशिश करे. कुछ चीज़ें हैं जो इस समय छुपी हुई हैं और हमें वक्त का इंतज़ार करना है, सही वक्त का इंतज़ार करना है. वक्त अपने आप उन रियलिटीज़ को, उन हिडन मिस्ट्रीज़ को आपके सामने लाएगा. वो अच्छी मिस्ट्रीज़ होंगी. आपको इमेजिनेटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है. वैसे भी हमने सबसे पहले बताया कि क्रिएटिविटी का ये मंथ है हम सब के लिए. और हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि वाटर है तो ड्रिंक वाटर. ठीक है. आप क्लेंजिंग का जब हम काम करते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की. एक होता है वी टेक बाथ एंड दैट्स अ फिजिकल क्लेंजिंग. एक है हमारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग एंड दैट इज़ वेरी वेरी important. So wish you all the very best, dear Virgos. One card for you. Oh yes, you have drawn Knight of Cups. Somebody is approaching you with a positive message, or maybe you are also ready to take some short journey. So all the very best, dear Virgos. Moving on to the next sun sign. Hello, dear Librans. You have drawn the rune Fehu, right? This is the rune Fehu, if you can see, right? And this particular rune, it's also associated with fertility. That's the agriculture, farming, right? So cattle, है ना, cattle, money, possessions, है ना, हमारे पास
खेत है, मैदान है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पोजेशंस है, तो कुछ ऐसा है जो आपके पास आ रहा है और आपको परवाह करनी है उन चीज़ों की जो आपके पास हैं। ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी कला है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी दुनिया है, ठीक है। एक एसोसिएशन है इस महीने, आपको बहुत प्यार मिलेगा, आप लोगों को प्यार बांटेंगे भी, यू विल स्प्रेड लव एंड यू विल एंजॉय गुड फूड एज वेल, राइट। सो दिस इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल रून। लेकिन जब भी चॉइस आए हेल्थ की तो हेल्थ इज़ वेल्थ, जब भी चॉइस आए मनी की या रिलेशनशिप की, सो ऑफ कोर्स आवर बॉन्ड्स आर आवर स्ट्रेंथ्स, सो हमें वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक कार्ड हम आपके लिए पिक करेंगे, जस्ट इमेजिन द 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मनी तो जब आना है वो आएगा ही आएगा, जिन्हें हमें बचाना है वो हमारे हैं बॉन्ड्स और हमारे रिलेशनशिप्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ ग्रेट मंथ अहेड डियर Librans. Moving on to the next sun sign, and that is dear Cups. And the rune that you've picked up for yourself, that is the rune called Manaz. So this particular rune, Manaz dear Cups, it is linked to humans, and primarily मतलब हमारी जो ability humans की होती है to reason and to logic. So you are excellent at that. एक correct human behavior, एक decency, एक politeness, एक cooperation, एक consideration for others, दूसरों को समझना, ठीक है. You'll be helping people, the ones who need your emotional support, right? How others see us, हमें दूसरे कैसे देखते हैं, ठीक है, उनका एटीट्यूड हमारे लिए कैसा है, राइट. सो लेकिन ये लोग, यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये लोग हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, ये लोग हमारे फोज, हमारे एनिमीज़ भी हो सकते हैं. सो और अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर आप थोड़ा सा फेस करते हैं इस मंथ, सो डू नॉट सिंपली पॉइंट द फिंगर ऑफ ब्लेम, बिकॉज यू नीड टू रिव्यू योर पास्ट relationships. Just keep an open mind and with open approach. I think with your intelligence, with your objectivity, you will definitely be able to sort out many issues. Now, a spiritual or educative path, that is what the rune is actually encouraging you to, move ahead with a lot of light, the light of intellect, the light of spiritualism, the light of education. So wonderful. One card for you, dear Cups. Page of Wands. एक छोटा सा travel भी predicted है. So all the very best and enjoy your month. Moving on to the next rune, and that is dear Sagittarius. And let's check out which rune you've picked for yourself. Haggler's. That's the rune you have picked for yourself, dear Sagittarius. And what this rune is about, actually, it describes a little unpleasant situation, right? Nothing to worry about that, but you need to tell yourself that very soon, you will eventually be, resolving the issue. You are evolving out of this situation, because spring always follows the ravages of winter. ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस आपको जनवरी मंथ में रखना है. आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है. एक टेस्ट है मॉरल स्ट्रेंथ का, एक टेस्ट है आपके करेज का, एंड यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट दिस too shall pass, and nature is with you, good vibes are with you, spiritual power is with you, and the beauty of the entire thing is that your own light is guiding you. So it's like God, He is sending His angels to give you a hug, to tell you that, that spring will always follow the ravages of winters. All the very best, dear Sagittarius. The card that I've picked for you is 4 of Swords, which is telling you that take rest, ठीक है, take rest. टाइम पर आप अपना खाना खाइए. अगर आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो टेक प्रॉपर रेस्ट. डोंट स्ट्रेस योर माइंड, डोंट स्ट्रेस योर बॉडी, बिकॉज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, इट विल बी लाइक अ healing therapy. But wonderful times are coming. Well, hello dear Capri's, and the rune that you've picked for yourself, it's Eva's
right? And you can just see that. Right, that's a rune that you've picked for yourself. Now, this particular rune, it's believed to have, your links with yew trees, right? And एक enlightenment का ये आपको मंथ प्रिडिक्ट कर रहा है. बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो life and death से associated होती हैं, because between life and death there's so much that happens, right? And actually there's nothing like death, because again it's a rebirth and the new beginnings. That's so actually कुछ inheritances की बात है यहाँ पर. इस महीने आप एक incredible stamina आपका लोगों को देखने को मिलेगा. You will show your tremendous willpower even in the face of the difficulties. So it's talking about your strength. एक सेंस ऑफ इनर स्टेबिलिटी भी आप अपने अंदर महसूस करेंगे. तो जो भी टेस्ट या चैलेंजेस किसी भी तरीके के आ रहे हैं, वो आप बहुत ही ब्यूटिफुली उन्हें आप मीट आउट करेंगे. एंड you will show a very strong power of endurance and patience. One card for you, dear Capricorn. Wow, the strength card. So just imagine, it was talking about a strength here, and the card is also a strength. Unconditional love is strength, your endurance, your patience, and everything. Wonderful month ahead. Moving on to the second last zodiac sign, that is Aquarius, in the list of the 12 zodiacs. And you have drawn Ava's, that is this rune. It's M written here, right? Now, this is talking about galloping. Horse, though traveling, ठीक है, and travel is indicated. It may be a holiday, it may be a house move, or even some kind of change of office, work, or even emigration, right? So एक रैपो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है between the horse and the ride. तो आपके प्लान्स क्या है, बहुत अच्छे से आप बनाइए. एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप का भी टाइम ये बता रहे हैं. अगर आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दैट टू इन पार्टनरशिप, ये दोस्ती भी बता रहा है कि एक अच्छी दोस्ती आपको मिलने वाली है या है, लेकिन उस दोस्ती का आपके रिश्ते पर एक अपर हैंड होगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा. और ये रिश्ता ये भी बताता है कि बॉस एंड एम्प्लॉय का हो सकता है, टीचर एंड टॉट का हो सकता है, पेरेंट एंड बच्चे का हो सकता है. सो कोऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, जो आपको इस महीने अपने अंदर रखनी है और दिखानी है. और आपका जो कार्ड है, दैट्स अ कार्ड ऑफ द लवर्स. तो सी, आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट, एंड एस्टैब्लिशिंग अ रैपो, तो it's talking about love, emotional dependence, emotional healing, and lot many things. So love is in the air, and rest you are brave enough to deal with. Moving on to the last sun sign, and that is dear Pisces. Well, Pisces, you have drawn the rune Isa, I-S-A. As you see, it's I and straight. So actually this rune means start fresh. Okay? Actually it represents ice, बर्फ. ठीक है, बर्फ को अगर आप देखेंगे, एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल you're in a frozen state. ठीक है, चाहे इमोशंस की बात हो, चीज़ एक रेजिस्टेंस है, जो आप एक आइस की तरह अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं. तो आइस कैन सिंबलाइज रेजिस्टेंस टू चेंज ऑल्सो. यू डोंट वांट टू चेंज, मे बी एक रिलक्टेंस है, राइट, लाइफ को समझने के लिए. सो बिकॉज लाइफ इज टेकिंग इट्स नेचुरल कोर्स, right? And when life takes its natural course, then resistance, that is not wise. So just flow with the time. ठीक है, एक status quo का पोजिशन है, जैसा चल रहा है आप उसे चलने दीजिए. क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करेंगे, राइट, रेजिस्ट करेंगे, then you will not be able to move forward, right? Because it's like that. तो और आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट और रेक्यूपरेशन की भी ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव वर्कड रियली रियली हार्ड. एंड प्लान्स को थोड़ा सा होल्ड पर रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है. एंड दैट्स इट. अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा मेरे को दिखता है कि इमोशंस फ्रीज कर रहे हैं. तो ये क्योंकि ये रून ही यही बता रहा है, ये एक स्टेट है, इट्स जस्ट अ स्टेट, राइट. तो अगर आप देखिए बर्फ़ को भी, तो इफ़ यू लीव इट, नेचुरल कॉज क्या है, वो अपने आप इट विल मेल्ट. सो
one card for you, dear Pisces. Yes, the card of judgment. That is, it's karmic. What all is happening? It's karmic, right? So just leave it in the hands of God. Have full faith. You just keep patience, take care of you, and just recuperate so that you can bounce back with stronger stamina and energy next month or in times to come. So thank you so very much, everyone, for joining me. These were the special January 2021 predictions. These were the rune readings, and I wish you all the very best. One more time I would say, इस महीने जो मेन कार्ड आपका आया है गाइडेंस लाइट का, that is the card of creativity, right? Be creative in all that you do. वो आपको वरी से बचाएगा, स्ट्रेस से बचाएगा और आपको एक न्यू एनर्जी देगा कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को बहुत ही ब्रेवली आप हैंडल कर पाएंगे. So all my prayers, have a wonderful month and God bless you.